तो आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो कोच बनना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, कैसे आप एक फ्रीलांस ट्रेनर बन सकते हैं। उसके लिए हमने आज इनवाइट किया है मिस इंद्रजीत कौर को। शी इज हैविंग 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति एक ट्रेनर बन सकता है, एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। Hello Inderjeet ji, welcome to my show Talk with Raj. Thank you for joining us today. How are you? Really, very well. Thank you so much. So आज हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग के बारे में। So सबसे पहले जानते हैं आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। How was your growing up? It has been a really beautiful journey. I started way back in the year 2003. And since then, I have been working as a part-time and a mix of freelancing. Yes, everything's not a very rosy picture, as they say. It's not easy, but yes. So there has to be a lot of consistency, efforts, and ये सब चीजें का जब ये mix हुआ, so everything bore fruits. And today I am, after 19 and a half years, a better person, a better trainer. So that ways. So I started with these spoken English institutes, and then gradually worked with a speech and drama academy, then a couple of companies training their employees with soft skill, email etiquette, telephone etiquette. And for the last two and a half years, the way it is there with all of us, the blessed pandemic happened and everything went online. So yes, got a different kind of an experience training people online as well, and did justice as far as possible with the trainers, because हाँ, physical presence हर जगह जरूरी होता है, but pandemic ने हम सबको घर पर बिठा दिया था, तो पर अब कुछ तो करना था, हिम्मत तो हम में से कोई नहीं हार सकता था. So वो in some way or the other, things proved to be things went better, and ultimately everything fell in place. So that is the way I could actually explain this journey. हाँ, काफी रोड बम्पी थी, सब कुछ ऐसे नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना कि बस ECT में ऐसी लाइन आती है तो बस that the person is over. So yeah, it has been a bumpy journey though, but yes, beautiful one. अच्छा, जब हम बचपन में ग्रो कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हो, तो हमारे मन में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने ट्रेनर बनना क्यों चूज किया? आपके पास भी ऑप्शन होंगे कि आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर या कोई और भी जॉब कर सकते हो. सो व्हाई यू हैव चोजन टू बी अ ट्रेनर? So see, why the why to this is that I find training very thrilling. I'm very passionate about training, and it is challenging as well. And the beautiful thing is that with your trainings, with each training, along with the person or along with the crowd whom you are training, you yourself grow. So अगर हम किसी और के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी और को ट्रेन कर रहे हैं, तो हम खुद भी उसके साथ ग्रो हो रहे हैं. So I think that was very that's the beautiful part of training, and somehow I'm quite a people's person. So developing a beautiful bond with them, meeting new people, making great professional and personal relationships with them. So it's an altogether different thing which a person experiences. So that's the reason why I'm really very passionate about it. Very close to my heart. So आपने ट्रेनिंग कब स्टार्ट किया था? As I mentioned, that I started my training career since the year 2003. Okay. So it again, it has been a wonderful journey. And then initially, like the same Indrajit, if you talk about 2003, so and the Indrajit of 2022, so that's absolutely different, because with age, with experience, and the number of professionals or students of all age groups which I have taught, they have been completely different. So I have taught a 4-year-old KG to nursery child to whatever age professionals.
So that's the reason, that's the reason why I was saying that it has been bumpy, but at the same वाह, time good as well. वाह, दिस इज अमेजिंग। सो आज हम बात कर रहे हैं ना फ्रीलांस ट्रेनिंग के बारे में। तो आपने बताया कि हाँ. आपके पास लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैं ये पूछना चाहता Mhm. हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपनी फ्रीलांस ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहता है या वो एक ट्रेनर बनना चाहता है, तो उसकी क्या स्टेप बाय स्टेप Mhm. प्रोसेस होंगे, वो कैसे अपनी ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है? देखिए, हर एक चीज का एक मतलब एक फिक्स तरीका तो नहीं होता, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस, लाइक कि क्या स्टेप्स रहने चाहिए। सो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, हमें इस चीज का बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। ओके। राइट, अगर मुझे पता था कि आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग इंग्लिश और ट्रेनिंग ओके। पीपल फॉर इंग्लिश, तो अगर मैं सोचती कि अब मैं मैथ्स की कुछ टीचर बन जाऊं या कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो जाऊं, तो जी। ऑब्वियसली मैं उसमें सक्सेसफुल अग्रीड। नहीं होती। सो initially you should know what your forte is. So once you अग्रीड। realize that that is your forte and आपको interest भी है, आपका passion भी है उसमें, so then वो सब चीजों का mix अगर हो जाए, so then you can start your journey. So as I said that हम और जो भी हमारी जैसे मैंने बताया, हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, उन या। सब चीजों के हमें आउटकम्स पता होने चाहिए। कि चलो आज हमने सोचा कि हम सॉफ्ट स्किल के ट्रेनर बनेंगे, या हम इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बनेंगे, तो हमें उस चीज का आउटकम पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरी 1 मंथ के सेशन के बाद जो भी मेरे ट्रेनीज या मेरे लर्नर्स या मेरे स्टूडेंट्स होंगे, वो ये लेवल तक की इंग्लिश का इफ दे विल प्रैक्टिस, तो वो चीज वो अचीव कर सकते हैं। अग्रीड। राइट। सो अगर अगर मैं आइल्स की ट्रेनिंग में भी हूँ, तो अगर स्टूडेंट आए मेरे पास 12th स्टैंडर्ड के बाद, तो वो बोले कि मैम हमें 6 बैंड्स अचीव करने हैं, so then my course is supposed to be designed in such a way that the student achieves those kind of bands. So first of all your forte, then you should know what your outcomes are, and then उसका पूरा प्रोसेस, जैसे अब इंग्लिश बहुत वास्ट है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, राइटिंग है, लिसनिंग है, सारी चीजें इन्वॉल्व हो, तो उनको भी हमें प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड वे में सेग्रीगेट कर देना चाहिए कि फर्स्ट क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, उसी का सब पॉइंट्स हो जाते हैं। राइट। एंड देन जब हम डिलीवर करते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि अरे आई हैव प्लान्ड इट इन ABCD, बट नो, इट शुड हैव बीन PQRS। So a trainer has to be flexible enough कि अरे नहीं, ये तो यही तरीका होना चाहिए, because we have lot of different kind of learners. किसी का कोई स्टाइल होता है, because this is not a school thing ना, कि 2+2 4 ही होता है, so that is the way it is to be taught. So there is a lot of flexibility which a trainer needs to have, and always attends her trainees with a smile, and उनको demotivate नहीं करना चाहिए. That's a very अग्रीड। important अग्रीड। point. And then last में हम पूरे सब चीजों को sum up करके हम चीजों को evaluate करना चाहिए कि अग्रीड। हमने whatever efforts we have put, so उसका outcome आ रहा है कि नहीं. So the learners need to be satisfied, because then that is the process that things go rolling. अग्रीड। So टोटली अग्री विद that could be the यू। design which a person has to do. एब्सोल्युटली टोटली एग्री विद यू। देखो क्या होता है ना कि ट्रेनिंग मींस क्या होता है, ट्रेन करना लोगों को, तो मतलब उनके लिए आउटकम लाना, उनको एक हाँ ट्रांसफॉर्मेशन जी। देना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर Right. स्टूडेंट और द पीपल। सो इफ यू आर कमिंग हम्म इन ट्रेनिंग फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप ट्रेनिंग फील्ड में आना क्यों चाहते हो, व्हाई यू वांट टू बी देयर। हम्म इफ यू नो दैट कि आई वांट टू ट्रांसफॉर्म पीपल, आई वांट टू गेट द रिजल्ट इन योर स्टूडेंट्स, हम्म राइट। फर्स्ट थिंग व्हाट हम्म यू हैव टू डू इज फिगर दैट आउट कि व्हाट इज योर एक्सपर्टीज। जैसे आपने भी बोला कि योर फोर्टे, हम्म आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, किस चीज के बारे में आप ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं, किस चीज के बारे में आप ज्यादा बात कर सकते हैं, किस चीज को आप बहुत अच्छी हम्म तरीके से समझा सकते हैं। इफ यू आर एबल टू कन्वे Right. योर मैसेज प्रॉपरली, देन दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, राइट। देन व्हाट यू हैव हम्म टू डू इज आफ्टर दैट you just start learning about that, have the experience and expertise on that topic, because देखो ट्रेनिंग हम्म इज नॉट अबाउट कि गए कुछ और बता दिया और सिर्फ बोलना है। इट इज नॉट अबाउट दैट, इज ऑल अबाउट Yes. the transformation, it is all about outcome, it is all about getting the result in
राइट, इन योर स्टूडेंट। तो समझना यह है कि आप किस चीज में रिजल्ट ला सकते हैं। इफ यू हैव एक्सपर्टीज देन ओनली गो अहेड विद दैट। थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल। सबसे पहले आपको जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था कि मैं अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को लाया कि आई विल ट्रेन यू एज ए पब्लिक स्पीकर। मैं आपको सिखाऊंगा कि बात कैसे करना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, स्पीच कैसे देना है। फ्रॉम देयर आई गॉट दैट रिजल्ट। I saw that कि उनमें वो changes आ रहे हैं, उनमें वो transformation आ रहा है, and on behalf of that I started learning, I started upgrading myself. So once I feel that कि अब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, अब ज्यादा लोगों को मैं सिखा सकता हूँ, then I have started training people professionally. So you just have to know your expertise, your knowledge area, and how you can get the result from people, right? ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब वो ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। वो जैसे फर्स्ट थिंग, कैसे वो लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, वो कैसे वो क्लाइंट को ला सकते हैं। बिकॉज जब हम ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास अब क्लाइंट नहीं है। मैं एक ट्रेनर हूँ, मैंने सर्टिफिकेशन भी कर लिया या मेरे पास एक्सपर्टीज भी है, बट हाउ विल आई गेट दैट ट्रेनिंग गिग, या हाउ कैन आई गेट द ट्रेनिंग चांस ऑफ ट्रेनिंग, राइट? So what are the step by step process so that we can get the training? Yeah. Okay. So the initial process, the very first one is that you need to prepare your own CV or the profile, which really has to be impressive. You don't have to keep harping about it कि मैंने ये भी कर लिया, और बहुत कोई बड़ा सा बहुत written format में इतना कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक पीपीटी टाइप का भी कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, जो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि द मोमेंट अ पर्सन रीड्स इट, तो उनको उस कैंडिडेट के बारे में, उस ट्रेनर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो सबसे फर्स्ट तो हमें वो अच्छे से प्रॉपर विथ ऑथेंटिकली वी हैव टू प्रिपेयर इट। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी these job sites are there, and these days LinkedIn is a very good source of getting job opportunities. So LinkedIn एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है जिससे हम प्रोफेशनली लोगों से वर्चुअली हम मिल सकते हैं, एंड इफ दे आर इन द सेम सिटी ऑफ कोर्स यू कैन start networking over coffee meets with them as independent trainers. I have been doing this for the past 6 to 8 months, especially post pandemic, because everything came to a standstill. So post pandemic मैंने ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखा that जब भी कोई opportunity मिली है लोगों से personally मिलने की, even if क्योंकि अब startups बहुत आ गए हैं इस दौरान, right? So सबके पास अपने individual offices हम सब afford भी नहीं कर सकते हैं, जो न्यू फ्रीलांसर्स होंगे, न्यू ट्रेनर्स होंगे, या कोई भी टाइप का स्टार्टअप होगा, because everybody is working from home. And I think that's a very good opportunity as well. Why to invest money in something जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है? अगर घर पर बैठकर सब अपना अपना अगर काम अच्छे से करे तो nothing like it. So these kind of coffee meets where the team gets together and they ask you to come up and present your proposal. So these kind of coffee meets or lunch meets are really important. LinkedIn virtual meets like Zoom, Google, whatever people prefer, and of course posting your requirements or fulfilling the vacancies which are required. So you can apply them online as well. So these are this is a very professional approach. Apart from that, yes, you have your own references, and trust me, कभी ऐसे फील नहीं करना चाहिए कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने कॉल कर दिया या मैंने ईमेल ड्रॉप कर दिया। शायद डायरेक्ट कॉल करना इतना प्रोफेशनल ना रहे, बट यस you can अगर आपके पास उनका email ID है, so you can drop them a very formal email that I am so and so, I came to know about you through somebody's reference. Maybe if you have some constructive reference, nothing like it, or from wherever you got, you can mention. Or if you have their phone numbers, you can drop them a WhatsApp message कि मैं आपसे कब connect कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So ये चीजों के लिए हमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए. And ये to be a freelance trainer, you need to have lot of patience. Wow. So consistency is the key. लगे रहो. So that's the mantra. लगे रहो.
हटो नहीं. ओके. So क्या उसमें कोई नुकसान तो है नहीं ना, if we keep अग्रीड अग्रीड. working towards it. सो So that is the key. तो आपने पहला ट्रेनिंग कब स्टार्ट किया था? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Um, you mean to say the very first, or कॉर्पोरेट. you're talking about the post-pandemic one? आई एम आस्किंग अबाउट द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. व्हेन आप कब आपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया That I did it a long time back only in the year था? ओके. 2003 only I did it. ओके. So that was through a personal reference ओके. through a friend of mine. हम्म. So, he referred that person to me. So it was quite a decent, this company. I would like to share that experience. They used to print brochures and everything. ओके. So, of various different companies. So, there was a basic quick grammar check of this, and there was this marketing people also. So, whom I had to train them for their telephone etiquette. So, of course, अब टेलीफोन एटिकेट है तो सॉफ्ट स्किल्स आता ही है उसमें. इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी ही है उनको क्योंकि उनके ब्रोशर्स इंग्लिश में होंगे. सो इट वाज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, but yes, there were authorities where I had to train them only purely for English. So that was one of the that was one of the project which I got through reference. And then things gradually started rolling, because through word of mouth also, because at that time LinkedIn was not there in scene at all. Mobile phones were not as common as they are today, and things used to come into the newspaper, and people used to formally go to their different offices, give their interviews, and do it. So that's how I got it. And then gradually, as I said, कि word of mouth था, emails थे, random going for interviews था. So ओके. this was the process. It वाओ. was. ऑसम Yes. ऑसम ऑसम. ओके. सो अभी आपने मेंशन किया था ना कि हमें एक पीपीटी क्रिएट करनी चाहिए, कि जब भी हम Mhm. प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें प्रेजेंटेशन हमारे साथ होना चाहिए खुद के रेफरेंस के लिए. तो हमें प्रेजेंटेशन Mhm. तैयार कैसे करनी चाहिए? हाउ वी कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन, और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए? Okay. सी, अगर कभी भी हमें कोई पीपीटी रेडी करनी है, सो वी नीड टू हैव एन एनालिसिस. उसे टेक्निकल कॉर्पोरेट टेक्निकल भाषा में, बीट एनी दिस थिंग, उसे हम बोलते हैं टीएनए, ओके. जिसका मतलब है ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस. ओके. ओके. सो अगर हमें ट्रेनिंग देनी है तो हमें उसके सारे WH फैमिली के आंसर्स पता होने चाहिए. व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई. सो अगर हमें वो ही चीजें नहीं पता, सो हम पीपीटी नहीं बना सकते. या. सो हमें क्यों देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, कहाँ उसके देनी है, क्या किसको देनी आउटकम्स है? होने चाहिए. यस, राइट, हु इज देयर. सो all these questions need to be answered. जब हमें उन सब चीजों के जवाब मिलते हैं, फिर हम अपनी पीपीटी बनाना स्टार्ट करते हैं. ओके. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं. फिर वो सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए. राइट. टिपिकल क्वेश्चंस तो एवरीबडी एंड एनी पर्सन कैन डू इट, एनीबडी एंड एवरीबडी. बट यू नीड टू चूज दोज रेलेवेंट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक द पीपीटी अकॉर्डिंगली. So, वो बहुत एक typical होता है कि, you need to ask yourself some questions like, कि by the end of this session, or by the end of my 30 hours of training or 30 days of training, my learners will be able to achieve A, B, C, D, E, So ओके. these kind of outcomes you can mention in your proposal. ओके. Okay, if you're putting up a proposal, yes, or any kind of presentation if you have to give. So, you can first do that. And then instead of giving them information, हमें स्कूल टीचर्स के जैसे हर चीज बतानी नहीं होती. ओके. राइट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो पहले का तरीका था. आजकल तो स्मार्ट क्लासेस भी स्कूल्स में आ गए हैं. सो सीबीएसई का करिकुलम भी काफी चेंज हो गया है. वो पुराना तरीका था. तो अब हमें अपने ट्रेनीज को हर चीज बतानी नहीं है. ओके. वी नीड टू आस्क देम क्वेश्चंस इन सच अ वे कि उनके पास से खुद जवाब आए, ताकि उन्हें इंटरेस्ट बना रहे. जब भी हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, सो दे आर वेरी अलर्ट, अदरवाइज वो सो जाएंगे.
क्योंकि अग्रीड। उनको पता है वो बोल रहे हैं, ट्रेनर बोल रहा है या बोल रही है, हम बोर हो रहे हैं, हमें अटेंड नहीं करना, एंड दे गो ऑफ टू स्लीप. ओके. सो या ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. सो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हमें उनको चीज देनी नहीं है, उनसे चीजें निकलवानी है. जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वी नीड टू एलिसिट थिंग्स फ्रॉम देम. या यस. वाह, सो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग दैट जब हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो हम प्रेजेंटेशन क्रिएट क्यों करते हैं? हमें विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं. सो यू जस्ट हैव टू हम्म. शोकेस. अगर हम किसी चित्र के बारे में बात करें, किसी पिक्चर के बारे में बात करें, अब जब हम बोलते हैं तो हम चित्र दिखा नहीं सकते, बट हमारे पास जब पीपीटी हम्म. होता है तो हम शो कर सकते हैं, और वो हम्म. विजुअल हमारे दिमाग में बहुत समय तक रहता है. सो हमारे पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जिसमें हम फोटोज को या किसी चित्र को देखकर हम किसी चीज को ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं, वो लंबे समय तक. जैसे बचपन में जब हम कहानियां सुनते थे ना, तो हमारे मन में एक पिक्चर चल रहा होता है, एक वीडियो चल रहा होता था कि यार हाँ, वहां पे एक पेड़ था, उसके ऊपर भूत रहता था, हमारे दादाजी वैसे कहानी सुनाते थे. सो वो हम्म. कहानी हमें अब तक याद है कि वैसा एक सीन था, क्योंकि हमने ना अपने आप को इमेजिन किया उस प्लेस पे, मैंने उसको देखा, हम्म. भले वो वर्चुअल ही था, हमारे माइंड में ही था. तो हाँ, सेम थिंग व्हाट यू हैव टू विजुअलाइज डू किया. इज इन योर पीपीटी आपको कुछ हम्म. इमेजेस रखने हैं, कुछ टेक्स्ट रखना है, ताकि लोगों के दिमाग में वो विजुअल इंपैक्ट क्रिएट हो. और आपको सिर्फ हम्म. इसलिए भी रखना है खुद के लिए कि आप शायद कोई पॉइंट भूलो ना, बट आपको हम्म. पीपीटी इतना भी नहीं भरना है ताकि लोग आपसे हटकर वो पीपीटी को देखने लग जाए. सो दीज आर सम हम्म. पॉइंट्स व्हाट यू कैन कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग योर पीपीटी. यस. ओके. हम्म. तो हम ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करने से पहले एक चीज और होता है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना होता है. तो शायद आपने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया होगा, कंटेंट क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना. तो वीडियो क्रिएट या कंटेंट लिखना या अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना कितना आपको हेल्प किया आपकी ट्रेनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में? See, I was very lucky enough, I should say, or rather, ओके. I'm blessed enough because I don't have any fear for camera. ओके. I am very confident about the way I present myself and the way I talk. ओके. So that was already there. So I did not have to take exceptional pain for it. But अगर किसी भी beginners के लिए या the people who want to become trainers, so मुझे ऐसे लगता है कि you can just dress up decently and present yourself, and you should have that kind of confidence. ओके. वो हम प्रैक्टिस से भी ला सकते हैं, स्टैंड बहुत बेसिक सिंपल चीजों से कि यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू कैन सी व्हाट योर एक्सप्रेशंस आर जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग अ वीडियो. अग्रीड. और वी हैव दीज फोन्स आल्सो, स्मार्टफोन्स, सो हमें मिरर के आगे भी खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल. तो all these kind of apps and these functions on our smartphones, they help us a lot for for recording all these things. So कभी अपना ऑडियो सुन लो, कभी अपनी वॉइस को थोड़ा फ्लक्चुएट करने की या कोशिश कीजिए, उससे बहुत इंटरेस्ट मेंटेन होता है. अग्रीड. थोड़ा अपनी ट्रेनिंग्स में हम ड्रामा क्रिएट करते हैं जिससे लोगों को इंटरेस्ट होता है. स्पीच एंड ड्रामा होता है. स्टोरी टेलिंग इज वन वेरी गुड ऑप्शन which one can add to it. Yes. वाह, ऑसम ऑसम. देखो, आपको क्या करना है सबसे पहले कि यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. आपको खुद को देखना है ना, खुद को प्रेजेंट करना है. हो सकता है कि आप बहुत अच्छे नॉलेज हो आपके पास आपके टॉपिक के बारे में, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो उस टॉपिक, बट अगर आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज नो मीनिंग ऑफ नोइंग दैट. आपको क्रिएट Yes. करना है वीडियो, आपको किसी और के लिए नहीं करना है. खुद करो, खुद रिकॉर्ड करो, खुद देखो, डिलीट करो. देयर इज नो इशू. Mhm. दूसरा फायदा ये हो सकता है कि जब आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो. लोग आपको देख रहे हैं एज एन एक्सपर्ट कि आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो. कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा जिसके कारण आप बात कर रहे हो. सो यू आर क्रिएटिंग योर पर्सनल ब्रांड. एक ब्रांड क्या होता है? जिसको जो बार बार लोगों के सामने जाता है, जिससे उसका उसके नेम से, उसके फेम से, उसके विजुअल इम्पैक्ट से आप एक एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करते हो कि ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड बुरा है, या इसका ये फायदे हैं. कोई ब्रांड अच्छा, कोई ब्रांड बुरा क्यों होता है? दो कारण से. या तो पहला होता है उसकी क्वालिटी, और दूसरा होता है कि वो लोगों के सामने कितनी बार जा रहा है, और उसके उसमें लोग कितना रेफरेंस दे रहे हैं. राइट. सो यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड. थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज, जब आप लोगों के सामने अपनी वीडियोस को लेके जा रहे हो, अपने कंटेंट को लेके जा रहे हो, आपको अगर 5 लोग भी देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो 5 लोग में से एक व्यक्ति कौन है जो आपको वो ट्रेनिंग दिला सकता है. अभी मैं Mhm. एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो इंडिया के सबसे टॉप जो भी व्यक्ति हैं वो देख रहे हैं, और उन्हें मेरी नीड हो सकता है ट्रेनर की नीड हो, और उन्हें मेरी वीडियो पसंद आ जाए. हो सकता है वो मुझे इनवाइट कर ले.
सो आपको सिर्फ वीडियो क्रिएट करना है, लोगों के सामने जाना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, यू जस्ट हैव टू गिव, यू जस्ट हैव टू क्रिएट वैल्यू इन पीपल्स लाइफ. This is how you will get more and more trainings, you will be able to build your personal brand. So these are the secret that you can do every single day. Will you agree with me? Oh, yes, of Yeah. course, absolutely. You Okay. never know when Okay. when that great opportunity is going to knock at your door. Okay. तो आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो अपनी ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जो अब ट्रेनर बनना चाहते हैं? सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम? My advice to these aspiring trainers would be that initially you have to be really passionate enough. You have to Yeah. start with that kind of passion and maintain it. So passion, you need to be great problem solvers. Yeah. Then you need to be adaptable. Yeah, Yeah. as I talked about flexibility, and Agreed. then you should be great influencers. Wow. Motivation has to be given. So, a mixture and amalgamation of all this could, make you really great trainers. वाह, ऑसम ऑसम ऑसम. सो आपने तो वो सारी चीजें ही एक जैसे बोलते हैं ना कि गागर में सागर, तो सारे आपने एडवाइस के रूप में उनको दे दिया. सो एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यू जस्ट हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ऑडियंस. क्या होता है कि हम Mhm, इंस्पायर किस व्यक्ति से होते हैं? जो हमारा बेस्ट वर्जन होता है. अगर मैं एक मोटिवेशनल mhm, स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो जो देश के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर होंगे उनसे मैं इंस्पायर्ड होऊंगा, वो मेरे इंस्पिरेशन होंगे mhm, कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ. सो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ऑडियंस. अब आपको खुद को देखना है कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो आप कैसे थे, और आपको जाना कहाँ है. तो आप जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो देखना कि आपने स्टार्ट कैसे किया था. क्या वो जब आपने स्टार्ट किया था उसका आज इंस्पिरेशन है? अगर मैं खुद को देखूं कि जब मैंने वीडियो क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी तो आई वाज स्पीकिंग लाइक हेल, और अभी मैं खुद को मानता हूँ कि उससे मैं 1000 2000% खुद को मैंने अपग्रेड कर लिया. अगर मैं आज खुद को देखूं जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आई विल इंस्पायर्ड बाय माई सेल्फ. सो mhm. यू जस्ट हैव टू बी द इंस्पिरेशन ऑफ यू, एंड दिस इज हाउ you will become the inspiration of people, right? True, So very thank true, you, Indrajit absolutely. ji, for being here. It was really great talking with you. Thank you so much for joining us today. Thank you so much for getting me here. Thank you.